कौन से हैं वो 5 प्रोडक्ट्स जो आपके चेहरे पे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को कंट्रोल करेंगे, आपके चेहरे को टाइट और प्लम्प रखेंगे, एक ब्यूटीफुल ग्लो देंगे। अगर आपके चेहरे पे टेक्सचर है यानी ओपन पोर्स, फाइन लाइंस, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, तो उसे भी काफी हद तक कंट्रोल करेंगे एंड आपके स्किन को एक हमेशा ब्यूटीफुल ल्यूमिनोसिटी देंगे। आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये है वीडियो अबाउट माय टॉप 5 holy grail skincare products that will give you glass skin if you use them correctly and if you use them consistently. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie, now a certified skincare consultant. और आज की वीडियो जैसे कि मैंने कहा are about top 5 products that should be a part of your skincare routine, especially if you're above the age of 25. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप एंजॉय करते हैं स्किन केयर एंड ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बनाती हूं नई वीडियोस हफ्ते में 3 बार, संडेज, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज। अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट के साथ जो मैंने रेगुलरली यूज करना शुरू किया था सिर्फ 1 साल पहले, दैट इज जनवरी ऑफ 2022। उससे पहले इस इंग्रेडिएंट को मैंने ऑन एंड ऑफ ट्राई किया। आई वॉज नॉट रेगुलर, तो मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। बट जब से मैंने इसको यूज किया है, करना शुरू किया है रेगुलरली इन माई स्किन केयर रूटीन, इट हैज चेंज्ड माई स्किन एंड एट दिस पॉइंट लुक एट माई स्किन केयरफुली। यहाँ आपको एक लाइन दिखेगी, दैट इज द ओनली डीप रिंकल दैट आई हैव ऑन माई फोरहेड, जो काफी सालों से है। और उसके नीचे एक छोटी सी लाइन है जो शायद अभी आपको दिख नहीं रही है बिकॉज ऑफ लाइटिंग एंड मेकअप। उसके अलावा मेरे चेहरे पे कोई रिंकल्स नहीं है। आई एम 37 years old एंड आई फील दैट दिस वन इंग्रेडिएंट is single-handedly responsible for controlling the aging on my skin. क्या है वो ingredient? That is peptides. पहले मैं आपको बता दूं कि पेप्टाइड्स होते क्या हैं। So peptides are protein and amino acid के chains जो आपके स्किन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। वो आपके स्किन पे कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। कोलेजन आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, आफ्टर द एज ऑफ 25 उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो व्हेन यू यूज अ पेप्टाइड सेरम, या आपके स्किन पे कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। अब बहुत सारे पेप्टाइड सेरम्स आते हैं मार्केट में। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोई भी आप रीजन लें, मैंने सिर्फ ट्राई किया है पेप्टाइड्स बाय द ब्रांड ऑर्डिनरी। इसके अलावा एक और सेपरेट पेप्टाइड मैंने ट्राई किया है जिस पे अलग वीडियो बनेगी, बट आई हैव ओनली ट्राइड द ऑर्डिनरी पेप्टाइड्स एंड आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन से पेप्टाइड्स लगाने चाहिए, किस एज पे कौन सा पेप्टाइड लगाना चाहिए और इसे कैसे लेयर करना चाहिए। पेप्टाइड्स लेयरिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं और ये जरा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो प्लीज डोंट लिसन टू दिस इन फास्ट फॉरवर्ड मोड। ध्यान से सुनिए। मोस्ट पेप्टाइड्स विल क्लैश विद डायरेक्ट एसिड्स एंड विटामिन सी, यानी कि अगर आप पेप्टाइड को विटामिन सी के साथ लगाते हैं तो वो ब्रेक डाउन करता है और आपको दोनों का ही असर नहीं मिलता या दोनों का फायदा नहीं मिलता। अगर आप पेप्टाइड्स को लेयर करते हैं AHA जैसे लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड के साथ तो भी वो ब्रेक करते हैं। अगर आप उसे यूज करते हैं BHA यानी या सैलिसिलिक एसिड के साथ तो भी आपको उसका फायदा नहीं मिलता। इन एडिशन टू दैट, पेप्टाइड्स को अवॉइड करें यूज करना विद थिंग्स लाइक एसिलिक एसिड, कोजिक एसिड, एनी ऑफ दीज थिंग्स। कुछ पेप्टाइड्स हैं जो आप रेटिनॉल के साथ सेफली यूज कर सकते हैं, बट कुछ हैं जो आप यूज नहीं कर सकते। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस एज ग्रुप के साथ आपको कौन से पेप्टाइड्स को यूज करना चाहिए। सो पहली चीज आपको रिमेंबर करनी है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो डायरेक्ट एसिड्स, विटामिन सी हैं, उसके साथ अपने पेप्टाइड को आप यूज नहीं करेंगे। अगर आपको फिर भी लेयरिंग करनी है पेप्टाइड के साथ तो आप लगा सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड सेरम, स्नेल म्यूसिन एसेंस, नियासिनामाइड, ये चीजें आप लगा सकते हैं। कुछ पेप्टाइड्स रेटिनॉल के साथ भी लगा, जैसे कि मैंने कहा कुछ पेप्टाइड्स को आप रेटिनॉल के साथ भी लगा सकते हैं, उसके बारे में आगे बात होगी। बट लेट्स से यू आर इन योर अर्ली टू मिड 20s, एक पेप्टाइड सेरम जो मैं आपको 100% रेकमेंड करूंगी, जो बहुत आइडियल है आपके एज ग्रुप के लिए, वो है ऑर्डिनरी का बफे पेप्टाइड या अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसे कहते हैं ऑर्डिनरी का मल्टी पेप्टाइड सेरम। इसमें काफी सारे पेप्टाइड्स हैं, नियासिनामाइड है, इट्स अ गुड ऑल इन वन सेरम एंड इन योर 20s, मिड 20s, इवन टू योर लेट 20s ये सेरम आइडियल है क्योंकि इसमें आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको बहुत सारी लेयरिंग नहीं करनी पड़ती। ऑल इन वन सेरम है, इट इज फैंटास्टिक व्हेन यू आर इन योर अर्ली, मिड टू लेट 20s, डिपेंडिंग आपकी स्किन की इस टाइम पे क्या हालत है। नाउ दिस पेप्टाइड सेरम
जैसे कि मैंने कहा, विटामिन सी, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, AHAs, BHAs के साथ आप यूज नहीं करेंगे। सो आप इसको अपने स्किन के रूटीन में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? इसे आप यूज कर सकते हैं रात को, क्योंकि होपफुली दिन को आप विटामिन सी लगाते हैं, इसलिए ऐसे आप यूज कर सकते हैं रात को, हफ्ते में 3 से 4, 5 बार, अगर आप कोई और एक्टिव नहीं लगाते। अगर आप किसी रात पे लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड लगाते हैं या किसी रात पे सैलिसिलिक एसिड लगाते हैं, तो उन रातों पे इस प्रोडक्ट को स्किप करें। एंड इन जनरल इन योर 20s यू कैन यूज दिस सेरम एंड दिस विल रियली हेल्प tighten and plump your skin. And once you start using it consistently, and you have to use it consistently, मतलब 1 महीना यूज किया, then you will be like अरे कुछ नहीं हुआ, because 1 महीने में कुछ नहीं होता है. But as you use it, like I have been using peptides now for over a year, and I can truly see a change in my skin, which was any case good quality. So you will be able to see changes and improvements in your overall skin in a few months. So if you're in your mid to early 20s, use the multi-peptide or the buffet peptide from The Ordinary. Similar formulations आपको मिल जाते हैं Ordinary में, Dr. Shades में, बहुत सारे other brands में, Indian brands में भी मिलते हैं, आप उसे चेक करके ऑप्ट कर सकते हैं. So that is the first one. Now let's say you are in your 30s and I have convinced you to use retinol. तो कौन से हैं वो 2 पेप्टाइड्स जो आपको यूज करने चाहिए? अगर आप अपने 30s में हैं तो अभी तक आपने रेटिनॉल किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो एक रेटिनॉल सेरम है, रेटिनॉल बेस्ड क्रीम है, किसी ना किसी फॉर्म में होपफुली शुरू कर दिया होगा. तो रेटिनॉल के साथ जो 2 सेरम्स मैं 100% रेकमेंड करती हूँ, जो एक सेरम मैं 100% रेकमेंड करती हूँ व्हेन यू आर इन योर अर्ली 30s, is this one by The Ordinary. This is Matrixyl 10% in HA. So HA hyaluronic acid है, Matrixyl 3000 ingredient का नाम है, 10% concentration है, ये आपको मिल जाता है Ordinary brand में. Now this, what does this do? And this is the first, this is my 3rd bottle. So this is the first peptide that I actually started using very regularly in my skincare routine. Now this definitely over a period of time will help with your fine lines, will help with your wrinkles. Sorry, my throat is a little bad. Will help with your fine lines, will help with your wrinkles. Because इसमें hyaluronic acid है, तो इसे आप लगाएंगे मुंह धोने के बाद रात के रूटीन में गीले चेहरे यानी डैम्प चेहरे पे 1 से 2 ड्रॉप आपके फेस एंड नेक के लिए. इसे आप आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं एंड देन यू आर जस्ट गोना मसाज इट ऑल इन. व्हेन इट इज अब्सॉर्ब्ड, उसके बाद आप लगाएंगे अपना रेटिनॉल सेरम या रेटिनॉल क्रीम और उसके बाद आप लगाएंगे फेस क्रीम. नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज ट्रूली लाइफ चेंजिंग. ये मेरे रूटीन का अभी भी पार्ट है. लेकिन अगर आपकी उम्र 30 से थोड़ी ज्यादा है, यूर इन योर मिड 30s एंड आपकी मेरी तरह ये वाली लाइन पड़ चुकी है, देन अ प्रोडक्ट दैट आई डू 100% recommend is this one. It is the arginine solution by The Ordinary. And ये बहुत वायरल हुआ था टिकटॉक पे. Everybody was calling it Botox in a bottle. Botox नहीं है ये, क्योंकि Botox मसल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है. But this temporarily does restrict the movement. एंड जितनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है उतने आपके लाइंस कम पड़ते हैं. दैट इज कॉमन सेंस. नाउ आई हैव ऑलरेडी शोन डिटेल्ड वीडियोस ऑन हाउ आई यूज दीज प्रोडक्ट्स, बट इस वीडियो के लिए भी मैं आपको बता दूं. सो आर्जिनिन की कॉन्सेंट्रेशन, आर्जिनिन की फॉर्मुलेशन और द वे दिस प्रोडक्ट इज, इट्स लिटरली लाइक वाटर. इट्स वेरी थिन. सो जब आप अपने रात के रूटीन में चेहरे को डबल क्लेंस करते हैं, ये हो जाता है स्टेप नंबर 1. Because this is so liquid and we go from thinnest to thickest consistency. अगर आपके रूटीन में टोनर है, एसेंस है, इस तरह की कोई चीज़ है तो आप वो लगाएंगे. उसके बाद सेरम्स में this is going to be your step number 1. इसे आप लगाएंगे and when you literally take this on, you will have to literally put it on your hands and then हाथों से आपको इसको चेहरे पे लगाना पड़ता है, because अगर डायरेक्टली ड्रॉपर से लगाएंगे it will just run down on your face completely. So you have to apply it and इसको लगाते टाइम आपको हल्का हल्का फोकस करना पड़ेगा जहां आपकी लाइंस पड़ती हैं. So like I focus a lot on my forehead, I focus यहाँ पे इस तरह जहां भी लाइंस पड़ती हैं वहां आपको इसको लगाना है. And then of course you will take it all over your face as well. And then this product does not dry down instantly. ठीक है, तो इसको ड्राई डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप मसाज करें and then wait. उसके बाद आप लगाएंगे ये प्रोडक्ट जो है Matrixyl 10% in HA. Now क्योंकि इसमें HA है यानी हाइलुरोनिक एसिड है,
यू शुड नो बाय नाउ हाइलुरोनिक एसिड हमेशा डैम्प चेहरे पे जाता है, यानी थोड़े गीले चेहरे पे, तो चेहरे को हल्का सा मिस्ट कर लें पानी के साथ या टोनर के साथ, किसी भी चीज के साथ, एंड देन गो इन विद अबाउट 2 ड्रॉप्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट्स अच्छे से चेहरे पे अब्सॉर्ब हो जाएं, चेहरा हो जाए कंप्लीटली ड्राई। फिर ड्राई चेहरे पे आप लगाएंगे अपना रेटिनॉल क्रीम, रेटिनॉल सेरम या ट्रेटिनॉइन। एज यू नो, मैं रेटिनॉल बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 4-5 साल होने वाले हैं अब। सो आई यूज ट्रेटिनॉइन एंड यू विल अप्लाई दैट ऑन ड्राई फेस, देन यू गोना वेट फॉर अनदर फ्यू मिनट्स एंड अप्लाई योर फेस क्रीम। ये जो कॉम्बिनेशन है मेट्रिक्सल, आर्जिनिन एंड योर रेटिनॉल, दिस इज सो गुड and you can only trust me at this point, right? क्योंकि आपको अपने खुद try करना पड़ेगा and then you'll have to make your own judgment. But if you trust me, this is so good. These 2 products are so affordable. I mean, now Ordinary is available in India. It's available on Nykaa. It is very affordable. अगर आपको मेट्रिक्सल 10% in HA नहीं मिलता तो आप मिनिमलिस्ट का मल्टी पेप्टाइड सेरम यूज कर सकते हैं, उसमें भी मेट्रिक्सल है। पर आर्जिनिन का अनफॉर्चुनेटली मेरे को कोई ड्यूप नहीं पता, तो आर्जिनिन आपको ऑर्डिनरी से ही लेना पड़ेगा। एंड इफ यू आर अबव द एज ऑफ 35 या अगर आप 30s में हैं एंड यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ रिंकल्स, दिस कॉम्बिनेशन इज फॉर यू एंड दिस इज समथिंग आई हाईली रेकमेंड। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल डू एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ पेप्टाइड्स। अब आ जाते हैं एक और पेप्टाइड पे जिसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है, यानी मतलब AHAs, BHAs तो वैसे भी आप पेप्टाइड्स के साथ नहीं लगा सकते, इस पर्टिकुलर पेप्टाइड को तो आप रेटिनॉल के साथ भी नहीं लगा सकते, एंड दैट इज योर वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटिफुल ब्लू कलर्ड कॉपर पेप्टाइड। Now, this is the copper peptide serum by The Ordinary. Copper peptide दूसरे brands में भी आता है. Unfortunately, I have not tried the other brand copper peptides because they are just so expensive. This is also expensive from an Ordinary point of view, but it is still cheaper than the others, and this is what I've tried. I'm on my 2nd bottle with the copper peptide serum, and now let me tell you how you can use it in your skincare routine. If you are already using AHAs, BHAs, retinol, तो इसको आप कैसे यूज करेंगे? क्योंकि कॉपर पेप्टाइड को लेके इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, which also means that you cannot use it with retinol. The way I like to use it is make this a part of my skincare routine twice a week. यानी हफ्ते के पहले 2 हफ्ते महीने में I will obviously use Matrixyl, Arginine, Retinol, फिर उसके 1-2 दिन के बाद ब्रेक लेके AHA या BHA, एंड एक पूरा हफ्ता मैं देती हूँ जब मैं अपने स्किन पे कोई एक्टिव्स नहीं लगाती, एज ए नो HA, BHA, नो रेटिनॉल, और तब सिर्फ लगाती हूँ मैं कॉपर पेप्टाइड सेरम with a nice hydrating face cream because my skin type is dry. That is the easiest way to incorporate this into your skincare routine, because otherwise if you want to literally incorporate all of these पेप्टाइड्स, योर रेटिनॉल, योर AHA, BHA, आपको अपने बाथरूम में एक टाइम टेबल स्टिक करना पड़ेगा, एंड इट्स जस्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो बिकॉज दिस प्रोडक्ट नीड्स टू बी यूज्ड अलोन, तो मैं इसको एक पूरा हफ्ता दे देती हूँ या 2 पूरे हफ्ते दे देती हूँ in a week, and that's when I use it. And this is also something I do जब रात को कभी कभी I'm very exhausted and I just don't have the energy to do anything. I just apply my copper peptide serum and my face cream and I go to sleep, and this again is really powerful. Now the point I want to make here is that if you're in your mid-20s, if you're in your early 30s, you don't really need the copper peptide serum, so don't waste your money on it. Don't think कि हम अभी से लगाएंगे तो स्किन और बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है. So unless you are having a lot of wrinkles, like my issue is this one wrinkle and I want to prevent others from forming, and I'm already 37, so I think मेरी उम्र हो गई है copper peptide की, but अगर आपकी नहीं हुई है तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, but this is a really good peptide to have. So the first ingredient जो है of the ingredients or the products I can't live without, those are peptides. उसमें आते हैं ये 4 peptides, and जैसे कि मैंने कहा, if you're in your early 20s, mid 20s, sort of late 20s, use the multi-peptide or the buffet from The Ordinary. अगर आप 30s में हैं तो arginine and matrixyl 10% का combination ideal है. 35 से ज़्यादा हैं, लाइन्स बढ़ चुकी हैं, और you feel that your skin needs a little more, copper peptide is going to be your best friend. So the first category of products that I can truly not live without would be my peptides. Now let's move on to product number 2. So the second category of products that I cannot live without
for me is an AHA, which is lactic acid. Now exfoliants पे, chemical exfoliants पे already मैं एक detailed video बना चुकी हूँ, but very quickly let me explain it to you. AHA basically stands for alpha hydroxy acid. ये water soluble chemical exfoliant होता है जो आपके चेहरे के top layer को exfoliate करता है, which means it removes dead skin, gives you a beautiful glow. इसके आते हैं broadly 3 type: lactic acid, which is ideal for normal to dry skin; glycolic acid, which is ideal for oily to combination skin; and mandelic acid, which is great for all skin types but is best for sensitive skin type. और इसी फैमिली का एक छोटा सा कजन है which is called PHA यानी polyhydroxy acid, which is again very very gentle and is usually given to people who either have sensitive skin, rosacea based skin. तो ये है 4 टाइप्स. क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई, मोस्टली ड्राई है, मुझे जो सूट करता है वो है लैक्टिक एसिड सेरम, एंड द वन आई एब्सोल्युटली लव इज द वन फ्रॉम गुड जीन्स. दिस इज द लैक्टिक एसिड सेरम बाय द Good Sunday Riley Good Jeans all-in-one lactic acid serum. Now there's a little bit of a backstory. This product is really expensive and which is why I need to tell you the backstory. Backstory ये है कि in 2021 मैंने sample size इसका उठाया था along with the retinol serum of Sunday Riley. Costed me about 100 dirhams and I picked it up from Sephora and I tried the product and I was like, the product is good, but Inky List is very good and the Ordinary is very good and I've tried all of them, so I will not buy it. And then summer sale होती है Sephora की online in July 2022. That's when जो एक पूरा set है जिसमें lactic acid, retinol, vitamin C और एक eye serum था, I got that on a crazy 50% off deal and I just picked it up. अब मैंने क्योंकि इतना expensive product खरीद लिया था, I started using it a lot more regularly and that's when I realized why this product is so expensive, because this is honestly very very good. It is really high on ingredients. It can just be used as a mask for 10 minutes and when you wash it off it gives you a beautiful glow. So if you can, I recommend the Good Genes lactic acid serum. If you cannot, lactic acid by the Inky List, lactic acid by the Ordinary, lactic acid by Dr. Sheikh, they're all beautiful and very very good, so you can choose any lactic acid. But the way I like to use lactic acid is at least once a week because I'm a little more frequent with my retinol. So lactic acid की बारी मेरे रूटीन में हफ्ते में एक बार आती है and this is what I like to use. This is the lactic acid serum by Sunday Riley. इसे मैं कैसे लगाती हूँ इसकी एक detailed video already है. You can go check it up in the how to playlist, so you will find it. And this I do believe exfoliates my skin, gives me a beautiful glow. And I like to use this before my retinol night. जैसे कि मैंने कहा, I like to use my lactic acid or my exfoliating treatment before a retinol night because when my skin is exfoliated well, I do feel my retinol performs better. You can layer your retinol and your lactic acid, but I strongly recommend कि आप ना करें because skin को oversensitize कर देता है, skin को dry कर देता है. Unless you are a pro and your skin can tolerate it, don't do it. A combination that should be used with your retinol is either retinol with niacinamide or retinol with any of the peptides that I have already shown you. उसके अलावा ज़्यादा लेयरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन केमिस्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट दिस इज समथिंग दैट आई लाइक टू यूज़ एंड दिस प्रोडक्ट हैज़ परफॉर्म्ड रियली रियली वेल फॉर मी. Sometimes before a party, if I feel my skin is looking really dull and I need a little bit of brightness, मैं इसको एक मास्क के जैसे भी यूज़ करती हूँ because that is what is recommended in the literature that came with the product. You can use it as a mask for about 10 minutes, wash it off, gives you a beautiful glow and you're good to go. So this is the second product or the second ingredient that I cannot live without, and I feel this really really works into my skincare routine. Now let's quickly move on to product number 3. So the next product is also an exfoliant and that is one of my favorites. If you have followed me on TikTok or Instagram, you know I talk about this ingredient all the time. It is beta hydroxy acid या फिर एक salicylic acid serum. My absolute favorite is the one from Inky List. It is the Inky List beta hydroxy acid serum जो मेरा भी खत्म हो गया है, and I have the one from Minimalist. This is what I'm using now. Beta hydroxy acid is the opposite of an alpha hydroxy acid. Alpha hydroxy acid होता है water soluble जो आपके स्किन के टॉप लेयर को एक्सफोलिएट करता है. Beta hydroxy acid होता है अल्फा हाइड्रोक्सी होता है वाटर सॉल्यूबल, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है ऑयल सॉल्यूबल जो आपके पोर्स को पेनिट्रेट करता है, उन्हें अंदर से क्लीन करता है. सो ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स प्रॉब्लम, सेबेशियस फिलामेंट्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को ये बहुत हद तक कंट्रोल करता है. बट अगर आपके चेहरे पे इस तरह के डीप ब्लैक हेड्स हैं
ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सीरम या किसी भी सैलिसिलिक एसिड सीरम से नहीं जाएंगे, इसके लिए आपको एक्सट्रैक्शंस ही करानी पड़ेंगी। बट अदर देन दैट नॉर्मल स्किन पे जो इश्यूज होते हैं वो काफी हद तक कंट्रोल एंड सॉल्व हो जाते हैं विद अ सैलिसिलिक एसिड सेरम। एज यू नो, आई एम यूजिंग द वन फ्रॉम मिनिमलिस्ट. दिस इज ऑल्सो ग्रेट. You can, most brands will have a 2% salicylic acid concentration, so you can use it from any brand of your choice, whatever fits in your budget. The minimalist one is pretty good. इसके अलावा the one from Chemist at Play, वो भी मैं try कर चुकी हूँ, that is also really good. But my favorite, the Inky List beta hydroxy acid serum. So this is again something I use once a week. So my routine is mostly like, if I'm using retinol and peptides for 4 days, one night would be a beta hydroxy acid, one night would be a AHA, which is my lactic acid, and one day I just go active free, or I will just use a really hydrating mask and things like that, and not use any retinol or any active on my skin. Now this is my regular skincare routine. And these 4 products I feel really help in improving your skin from an overall perspective. Because जब हम एक skin के ग्लो के बारे में बात करते हैं, ग्लास स्किन के बारे में बात करते हैं, या सुपर हेल्दी स्किन के बारे में बात करते हैं, you want to control issues at all levels. Aging is normal and aging is natural and it is beautiful. The fact that you're aging means that you're living another day, and that itself is a big blessing. But you want to control those fine lines and wrinkles. You don't want to look haggard, and which is why the combination of your peptides along with your retinol works really well. The AHA gives you a gorgeous glow. आप इसको हफ्ते में 2 बार भी यूज कर सकते हैं. I use it once a week. And your BHA, which again I use once a week because I don't have really large open pores anymore. I don't really have blackheads wala issue, so I don't need to use this product that frequently. And now let's move on to product number 4, and I'm pretty sure you've already guessed what it is. So the next product that I can actually not live without, and it is the only skincare product that I have been using super consistently ever since I started my skincare journey, is retinol. अभी मेरे हाथ में है Sunday Riley का retinol serum. I personally use tretinoin, so if you've been seeing my videos, you know that is what I use, which is medical grade 0.025%. Tretinoin is what I use. But when I started my skincare journey, जैसे मैं आप सबको बताती हूँ, I actually started with a retinol based cream, and the first one I ever used was ROC Max Hydration. उस time पे used to not get it in Dubai, so I actually requested for a friend to get it for me from the United States when they were traveling. ROC Max Hydration के साथ शुरुआत करी. उसके बाद मैंने बहुत सारा different levels of ordinary के retinol serums लगाए, and finally when I felt my skin was ready, I moved on to tretinoin 0.025%. And I feel the real change in my skin is what I saw once I started using tretinoin. But वो मेरी journey इतनी अमेजिंग नहीं होती अगर मैंने माइल्डर जेंटलर रेटिनॉल्स पहले यूज नहीं किए होते, बिकॉज देन इफ आई वुड हैव जस्ट स्टार्टेड विद रेटिनॉल आई वुड हैव एंडेड अप ऑल फ्लेकी, रैशी, रेड, एंड बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती. सो इफ यू आर अबव द एज ऑफ 25, 26, you're not pregnant, you're not nursing, I highly recommend to you get started with a gentle retinol based cream or a retinol based serum. If you generally have sensitive skin, then start with a simple retinol cream. And a simple retinol cream that I absolutely love is Olay Regenerist 24. It is a gorgeous formula. It is super gentle on your skin. You can start by using it a few times a week. India में we get the one from Pilgrim, the Pilgrim vitamin C retinol या hyaluronic acid retinol, one of the 2 combinations. That itself is a gorgeous retinol based product. If you can get the bakuchiol peptide serum, अगर आपको retinol सूट नहीं करता, or if you're pregnant and breastfeeding, you can get the bakuchiol peptide serum by Dr. Sheth. That is also amazing. retinol के बहुत सारे options हैं, और मेरे channel पे retinol को लेके कैसे लगाना है, कब लगाना है, retinol क्या होता है, there are thousands of, not thousands, 5-6 videos which has a lot of information which you can easily go back and look at. But retinol is definitely a product that has been single-handedly responsible for giving me good clear skin ever since I started my skincare journey, and that is something I highly recommend. Most important product, and I kept this for the last because this is a product that is something that everyone can use. It is super simple, it is idiot proof, it should be a part of your skincare routine, and I so wish कि मैंने इसे पहले use करना शुरू कर दिया था, and that is sunscreen. Just to give you guys a little bit of context,
until I was about 31. So I'm 37 now. तो 6 साल पहले तक I was not regular with my sunscreen. I always had a sunscreen. मैं लगाती थी ऐसे जब मूड हो गया, और if I felt कि आज बहुत ज़्यादा धूप है तो आज sunscreen लगाना चाहिए, और if I was going to a beach, जो इतना होता नहीं था until I moved to Dubai. So that's when I used to use a sunscreen. Otherwise, sunscreen was not a part of my skincare routine. But believe you me, ever since I've started using sunscreen and been so regular, almost obsessed with it, I feel so many things in my skin have changed. I feel single-handedly sunscreen use करने से जो मेरे फाइन लाइंस रिंकल्स की प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन हो गई है, बिकॉज ऑब्वियसली ये वाली लाइन, मतलब आई एक्चुअली सॉ अ वीडियो ऑफ मी, अ पिक्चर ऑफ मी फ्रॉम लाइक 10 years ago. ये लाइन तभी भी थी, बट इन जनरल आई फील दैट आगे की लाइन्स नहीं आई हैं. माई स्किन हैज़ बिन सो मच बेटर. And most importantly, I feel that beta hydroxy acid is great for your open pores and blackheads. But in general, using a sunscreen also helps control your blackheads and your whiteheads because you're protecting your skin at all times. Sunscreen is 100% not overrated. I know a lot of people say कि ये अभी शुरू हुआ है. This is like a influencer dermatologist thing. This is a fad. It's not a fad. I am proof at 37 that if there is good that has happened on my skin, it is because of using sunscreen. I've actually created a full-length video on my top 5 sunscreens of 2022. अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं इसे यहाँ link कर दूँगी. I hope you enjoyed this video because this is a super honest, the top 5 products that I cannot live without ever. And it's not so much about products, it's more about ingredients, because products and brands, you can literally buy anything from anywhere. Most pharmacies also give you great products. The best anti-aging product I've ever used is actually the cheapest, which is Retinol, जो India में I think 150 to 200 rupees का आता है. In Dubai, I get it for like 35-40 dirhams. So it's literally the cheapest or the most affordable product I have ever used, and that is really, really worked on my skin. So I don't think brands are really important here. It is all about what works on your skin and the ingredients and how you sort of layer it together. Because बहुत time मुझसे पूछा जाता है that आप बेस्ट क्रीम बता दो, बेस्ट फेस वॉश, बेस्ट सेरम, बेस्ट ये, बेस्ट वो. बेस्ट कुछ नहीं होता है. बेस्ट वो होता है जो आपको सूट कर जाए, right? And it's all about being consistent with your skincare routine. On this happy note, I'm going to say bye, and if you're still watching the video, thank you so much. Do consider subscribing to the channel and liking this video if you enjoyed it. I will see you in the next one. Till then, take great care of yourself. Bye.